वेलकम पिलाने वेलकम टू द सेशन एसके राउत हियर पुणी आरंभ करवा तो जो मैंने सेशन जॉइन करिया कथा जॉइन कर जाओ विल बी स्टार्टिंग द क्लास ओके Okay, so let's start the class. So welcome पिलाने welcome to the session टिके टेक्निकली इतला तो आरंभ कर दो हमें सेशन को आरंभ करिबा आज पॉलिटी सेशन जो माने अच्छो जॉइन करि जे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अच्छी निश्चित भाव में हेल्पफुल हबो तो जो माने भी अच्छो तुमरो ग्रुप रे निज निजर ग्रुप रे ताको शेयर कर दियो हमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एटा सबु क्लास पई सबु एग्जाम पई हेल्पफुल हबो केवल ओएस पई नुहो एएसओ अपकमिंग एएसओ पई भी हमरो हेल्पफुल हबो तेणु निश्चित भाव में जॉइन करो एवं किछिटा हेल्पफुल निश्चित भाव में करा हेबो ठीक अच्छी तो आरंभ करिबा हमें हमर वाईटी सेशन पॉलिटी ओके ओके पिलाने आरंभ करिया पॉलिटी मॉक टेस्ट 4 बिफोर दैट लुक एट द इंस्पायरिंग कोट ऑफ द डे नेवर से नो नेवर से आई कैन नॉट फॉर यू आर इनफाइनाइट ऑल द पावर इज विद इन यू कैन डू एनीथिंग स्वामी विवेकानंद कहते आम सबू किछि करि परिबा आम भितर असीम शक्ति अच्छी असीम साहस अच्छी असीम धैर्य अच्छी आम भितर असीम शक्ति अच्छी तेणु आम जहाँ चाहिए करें इट्स ए फैक्ट वी कैन डू एनीथिंग नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड जदि आम एकाग्र चित्तर गोटे कथा को देखा एकाग्र चित्तर जदि करवा गोटे कम बिगिनिंग रु आरंभ करवा कंसंट्रेशन रखा एवं परसिवरेंटली फॉलो करवा ताले विल गेट टू द ट्रैक ठीक अच्छे तो निश्चित भाव में यहाँ गोटे बड़ा इंस्पायरिंग कोट यू आर द इनफाइनाइट बोली कहते तुम्हें असीम तो तुम्हें निश्चित सबकि यू हैव द पावर टू डू विद इन यू ये गोटे अच्छी वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव जोटा फेब्रुआरी 2025 रे हिची सेटा मन रखते इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च टू स्टैंडर्डाइज एंड स्ट्रीमलाइन पोर्ट ऑपरेशंस अक्रॉस इंडिया वन नेशन वन पोर्ट सिस्टम ओके सो प्लीज आसिबा हमें क्वेश्चन को आसिबा क्वेश्चन को हाँ गुड इवनिंग ओके 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 ठीक है तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन टा consider the following statements the aspirational district program was launched in 2018 by Niti Aayog a total number of 112 underdeveloped districts
are covered under this scheme. 10 districts of Odisha are covered under the scheme now. Which is correct? 10 districts of Odisha which are covered. Okay. ठीक है पिलाने पढ़ाई से हमें गुड आंसर हम गुड इवनिंग प्रियदर्शिनी शशिरेखा यस ऑल ऑफ आवर फेवरेट ओके सो कंसीडर इटा कौन हम आंसर तो आम देखिए जी पिलाने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होची जोटा आमर अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट मान को डेवलप करने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये करा जाए पोष्य जिला जो पोष्य जिला ये करा जाइए तेणु यहाँ नीति आयोग कर ठीक अच्छी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो आम देखुचे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिला मानकर डेवलपमेंट पर कराई यहाँ नीति आयोग गोटे इनिशिएटिव जेहेतु नीति आयोग मॉनिटर्स डिजाइन्स लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री तेणु यहाँ गोटे तार भी इनिशिएटिव एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तार गोटे इनिशिएटिव अच्छी A total number of 112 underdeveloped districts are covered under this scheme. एटा भी गोटे ठीक कथा टोटल 190 एंड ओडिशा रो 10टा जिला अच्छंती एबे बाकी देखिबो जदि किछि चेंज हेतिबो निश्चित भाव में मते जणैबो मेसेज रे तो एटा 1 2 3 हबो एटा डी हबो आंसर ठीक अछि डी हबो एनी अदर कमेंट ठीक है जो मैंने भी जहाँ कमेंट देवाई चाहूँ कि देखो यहाँ इंटरएक्टिव सेक्शन आम करुचे सबू पिलांकर हेल्पफुल हम तो निश्चित भाव में समस्त कोऑपरेशन तुम्हारा दरकार तुम्हें जदि किसी जानिच बा ए विषय किसी कहया चाहूँ यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी इन दैट कमेंट बॉक्स ठीक अच्छे तो यहाँ पिला डी हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग ऑल हम येस ऑल ठीक अच्छे तो आम देखुचे तार अच्छी जोटा मुझे देखुची 10 districts identified aspirational district under the aspirational district program. These districts are Dhenkanal, Gajpati, Kolahandi, Kandhamal, Nuapada, Raigada, Koraput, Malkanagiri, Balangir and Navrangpur. Remember the district may be useful for your exams and get updated on that also. Aspirational district program. ठीक अच्छे तो यहाँ नीति आयोग 2018 लॉन्च करछंती एवं एटा अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट बा जो डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट मान को निया जाइछि फास्टर डेवलपमेंट पाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन बा डेवलपमेंट केमती रहिबो सब जिला मानकर सेटा विषय अछि ओके दैट्स गुड नेक्स्ट एसिया बहुत शॉर्ट आज बहुत कांसेप्ट क्वेश्चन अछि बेसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नै जल्दी सर जीवो तो आराम करो नेक्स्ट क्वेश्चन Who among the following Amendment Act restored the power of Supreme Court and High Courts in respect of judicial review? What will be the answer? Jaldi answer diyo. Which of the following Amendments Act restored the power of the Supreme Court and High Court in respect of judicial review? Judicial review पावर को कौ अमेंडमेंट एक्ट रे रिस्टोर कराइतला ता माने कौ अमेंडमेंट रे ताकू उच्छेद कराई छे नहीं कि सेटा भी जानिया दरकार जेतु रिस्टोर करा गला माने कोन ता माने तार पावर को छड़े नि आइतला पार्लियामेंट रो अमेंडिंग पावर को वर्तमान ताकू रिस्टोर कराई छे रिस्टोर करिवा माने काना रिस्टोर करिया माने फोन ताकू फेरी दिया छे तो कोठा आंसर यस one answer D 73rd नो प्लान देखो 42nd amendment रे 42nd amendment रे जोटा 1976 रे judicial review power was taken away parliament judicial review power को नहीं जाइथला 42nd amendment act 1976 रे जुडिशियल रिव्यू क्षमता को उठे दि जाइथिला अर्थात सुप्रीम कोर्ट आ जुडिशियल रिव्यू करि परिबनी जे कोनोसी अमेंडमेंट हेले अंडर आर्टिकल 368 रे जुडिशियल रिव्यू करा जीव नाही पार्लियामेंट रो
amending power टा absolute ବୋଲି declare करा ହେଇଥିଲା. That was in 42nd Amendment Act 1976 during Indira Gandhi regime. तापरे 43rd रे सेटा 1977 रे JR power was restored. Answer of B. 43rd Amendment Act 1977. एटी मन रख कि 42nd Amendment Act रे जो सांविधानिक परिवर्तन होता the constitutional changes made in the constitution by 42nd Amendment Act were restored, mostly restored by 43rd and 44th Amendment. 42nd रे जो व्यतिक्रम होता ताकू सुधार ताकू ठीक कर दिया जाइतला 43rd और 44th Amendment Act रे. And interestingly 43rd and 44th Amendment Acts were enacted during the Morarji Desai regime. They were enacted by Parliament during the Morarji Desai regime, and it corrected, rectified or restored the lost provisions of the Constitution by 42nd Amendment. Okay, so that was the B answer. The B and 44th is very important. It is right to property, and 73rd is about Panchayat Raj, PRIs 1992 it and 1978. चलो बेटा नेक्स्ट को जीवा. चलो which of the following, good evening Ketaki, nice to see you after long gap नहीं कि. Okay, which of the following comes first among the table of precedence? Table of precedence रे प्रथम किए आसीबो? Table of precedence माने official ranking रे प्रथम किए आसीबो? Yes, Deputy Chairperson of Rajya Sabha, Attorney General of India, आउ तुमर किए अछि Chief Ministers within their state Cabinet Secretary. सी उज्ज्वला धनबाद. यस यस आउ के क्वेश्चन आंसर दबो जल्दी जल्दी समस्त पार्टिसिपेट करो. प्लीज पार्टिसिपेट, कोऑपरेट. ओके, गुड इवनिंग हीरा. ठीक अच्छे तो पे देखिए जदि यहाँ आमर आंसर सी हम यहाँ ये 7 रे अच्छी माने 7 8 बोली कहती कारण 5 एटा मिसेले एमाने सबू 10 11 रे आसीबे. ये 10 रे आसीबो, ये 11 रे आसीबो. अटॉर्नी जनरल ये कैबिनेट सेक्रेटरी बहुत तले आसीबो. कैबिनेट सेक्रेटरी होची हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द कंट्री. ये भी सही रैंक रे आसीबो से जो अटॉर्नी जनरल रैंक रे ये भी से 11 आसीबो. तेणु 7 विदिन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट हेले तांकर भी कमी जीवो. कार चीफ मिनिस्टर विदिन द स्टेट अच्छी, विदिन द स्टेट तमाने मुख्यमंत्री रैंक होची राज्य रे 7 नंबर, जोटा कि बाहर गले से चेंज हो बाहर स्टेट रे. तेणु यहाँ आंसर हम कौन रे सी. टेबल ऑफ प्रेसिडेंस उपर आइडिया करथिबो मिनिमम 10-15 खंड देखि देथिबो. नेक्स्ट, प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ is provided under which article? Procedure established by law is provided by which article? Procedure established by law is established by which articles? कौन अब आंसर 4 नंबर. Yes, procedure established by law is provided under which article of the Indian Constitution? Procedure established by law means the law, as per the law the thing will be done. तो यहाँ हमें देखिए प्लान है, बहुत इजी अच्छी कौटा हम 3 नंबर 4 नंबर सी 142 नो रे. ओके प्लान हमें देखिए जदि आर्टिकल 13 होची डेफिनेशन ऑफ लॉ बा जुडिशियल रिव्यू कहते डेफिनेशन ऑफ लॉ, अर्थात नो लॉ कैन कंट्रावेन फंडामेंटल राइट्स बोली कहुई. डेफिनेशन ऑफ लॉ कहती बा सोर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू 13 टा होची मेन आर्टिकल्स.
21 होची सेटा जुडिशियल रिव्यू एटा होची ए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ रो 140 होची पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू orders and decrees and 226 तो जानती हो पावर ऑफ कौन हाई कोर्ट टू इश्यू रीट्स तो एटा आंसर हम बी हम आर्टिकल 21 अच्छी नो पर्सन शैल बी deprived of his or her life and personal liberty except procedure established by law. ता अर्थ कौन ता माने if law can take away your life it can be taken away. तो procedure established by law टा गोटे limited version of judicial review कहा जाए पिला माने दीटा डायमेंशन अच्छी गोटे procedure established by law आ गोटे due process of law. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टा अमेरिकार एंड तुमरो जोटा देखुच प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हला आमर त माने आवर सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट हैव ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ दैट मीन्स इट विल एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ ए लॉ जो लॉटा पास करिवो पार्लियामेंट हो कि स्टेट लेजिस्लेचर हो तार संवैधानिकता ठीक अछि ना नै से देखिबो अर्थात संविधान अनुसार ठीक अछि ना देखिबो ताठू अधिक से देखिपर ना से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बट इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न्ड it is wider than procedure established by law. In America, the court does not only examines the constitutionality of law, but also examines whether the law is just, fair and reasonable or not. तमने लॉटा रिजनेबल ना नहीं से विषय देखिबो जोटा कि इंडियन कोर्ट देखि पारंती नाही बट ग्रेजुअली इन द रिसेंट टाइम्स सुप्रीम कोर्ट इज यूजिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेनका गांधी versus Union of India case 1978 Supreme Court explicitly resorted to due process of law. Due process of law is there. So setipai answer B habo but remember it is provided under article 21 and procedure established by law is borrowed from Japanese constitution. It is borrowed from what? Borrowed from Japanese constitution. ओके बेटा चलो गोटे गोटे क्वेश्चन मल्टीपल डिस्कशन है भल से छोट क्वेश्चन नहीं आसली सो दैट तुमको आउ बेसी कष्ट करने को पड़ो ना छोट क्वेश्चन देखिए बहुत जिनस जाना एमती ऑप्शन बड़ बड़ देखले डर लगुच रियल एग्जाम रे जा हम किंतु जापानीज यस जापानी कॉन्स्टिट्यूशन यस वेरी गुड सर थैंक यू फॉर आंसरिंग थैंक यू फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन यू पीपल ठीक अच्छे बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट करुच आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड जॉइनिंग माय सेशंस एवरीडे लाइव दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी ओके. So who describes India as a bargaining federalism? 5 number A. अच्छा any other answer? Any other answer? 5 number A. 5 number C. Ujjala A. C. पिलाने देखो ग्रानविल ऑस्टिन कहितला एटा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ठीक कहिछ तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया को देता तीनटा जिनस मन रख यहाँ वाला मोरिस जोन्स है तुम कौन रे बार्गेनिंग फेडरलिज्म आउ केस उहार कहला कौन जोटा कुछ क्वासी फेडरल ये तीनटा मेजर डेफिनेशन इंडियन फेडरलिज्म उपरे जोटा कि एग्जाम रे आसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म एइथ पे कुआ जाय कि ड्यू टू द
emergence of regional parties आसला परे भारतीय राजनीतिक मान चित्र रे they are playing important role in the formation and dissolution of government at the center. So they are bargaining with the major party coalition, and therefore bargaining federalism is probably there. So it was told by Maurice Jones. Is that clear? It was told by Maurice Jones. Cooperative federalism by Granville Austin, Maurice Jones by bargaining federalism by Maurice Jones, of federation by unitary state with federating subsidiary federal features. सेटा केसीवेयर कहते एवं से quasi federal बेली कहते. We are not purely federal, and as you remember, India is an example of what? Example of holding together federation. I mean holding together federation, not coming together federation. ସେଥିପାଇଁ ଆମର pure federation नुह तेणु सेटा क्वासी फेडरल बेली केसी वेयर हमको कहते कारण that is a fact also. We are not classical federation. आसिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 6. Banking and insurance falls under which list? Banking and insurance falls under which list? We are expecting any particular question from list ऊपर आम गोटे क्वेश्चन जमते एक्सपेक्ट करवा कथा कारण प्राय वर्ष लिस्ट ऊपर क्वेश्चन एवरेज ईयर आसी दैट वी शुड एक्सपेक्ट आल्सो कि समवेयर इट इज सम क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन मे बी एक्सपेक्टेड. Not yes, not watertight. Yes, very good Sunita. Yes, union list. Very good. Union list रे अछि union list रे अछि A रे अछि. Yes, चलिबा में union list रे अछि टिके list ऊपर आइडिया करियो concurrent केते concurrent रे कोन कोन अछि state रे कोन कोन अछि एवराटी भल से देखियो नै कि एटा बहुत सारा पडुछि. तो निश्चित भाव रे आसीबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को. केते नंबर रे 7 नंबर. Constitutional Amendment Act in India is made under which article? Constitutional Amendment Act India रे को amendment article रे हुए, को article रे हुए, को article under रे हुए बिले में कहूचे को article under रे constitutional amendment हुए. Yes, 70 गटा अछि 70 कई नहीं तो 7D. अच्छा 7D वेरी गुड. प्लान 7D तो ठीक कहिछ बट मने रखो आर्टिकल 368 क्लॉज 3 रे अछि स्टेट रैटिफिकेशन. स्टेट रैटिफिकेशन ता अछि कोतरे ना 368 3 रे अछि प्लान. स्टेट रैटिफिकेशन माने किछि अमेंडमेंट हेले से अमेंडमेंट गुडी को स्टेट मानकू पठा जाए रैटिफाई करिया पई अर्थात अप्रूव करिया पई एंड अधा स्टेट हाफ ऑफ द स्टेट अप्रूवल हेले ही सेटा ही परिबो. फॉर एग्जांपल 7 शेड्यूल रे जदी किछि चेंज हबो ताले सेटा स्टेट अप्रूवल पई आसीबो. राष्ट्रपति निर्वाचन रे जदी किछि चेंज हबो सेटा भी स्टेट अप्रूवल पई आसीबो. एवं इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स टैक्स विषय रे जदी कि चेंज हो सेटा भी राष्ट्रपति एटा स्टेट मानक आसीबो. फॉर एग्जांपल 101 अमेंडमेंट एक्ट जोटा को हम जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट कहूचे सेटा राज्य मानकर अप्रूवल पे आसीतला. तेनु 368(3) धारा रे सेटा रहिछि जोटा कि तुमे देखि परियो स्टेट रैटिफिकेशन. तो आंसर डी हबो. नेक्स्ट डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स. ओ माय गॉड. Discretionary grants are provided under plan. ए क्वेश्चन रो दीटा डायमेंशन कहि देबे आंसर दियो. डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स माने जोटा दी प्रकार ग्रांट्स अछि. गोटा स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जोटा फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन रे दिया जाए. जोटा फाइनेंस कमिशन राज्य मान को जो ग्रांट्स दिया होची
सेटा फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन अंडर रे ग्रांट दिया जाए सेटा स्टैट्यूटोरी ग्रांट्स कहा जाए आउ किछि अछि राज्य सरकार आउ केंद्र सरकार जनतांकर हित उद्देश्य रे किछि पैसा दान करि परिबे माने ग्रांट दे परिबे सेटा ताको इच्छाधीन सेटा राज्य दे परिबो केंद्र भी दे परिबो जमती धर ओडिशा रे साइक्लोन होउची महाराष्ट्र पैसा दे पड़ुची कि जोरा डेवलप्ड स्टेट अछन समान किछि किछि पैसा भी दउछन तो सेटा ग्रांट कहा जाए एवं सेटा डिस्क्रिशन एथि पे कहा जाए ताको मन इच्छा समान दे परिबे इच्छाधीन ग्रांट किंतु पिलाने यार ए आर्टिकलटा एठी नाही अच्छी अच्छी 82 अच्छा ठीक 82 रे अच्छी वेरी गुड मु चेक करनी बिले अच्छा डी अच्छी तो पिलाने बुझी परछो एटा फॉर पब्लिक पर्पज रे दिया हबो फॉर पब्लिक पर्पज रे एवं बाय सेंटर एंड कौन रे स्टेट्स दी जन जगह देबे एटा प्लान जो अच्छी एटा अच्छी हमर कोन स्टैट्यूटोरी ग्रांट्स कोन मेड on the recommendation of on the recommendation of finance commission of India of finance commission को recommendation जो grant दिया जाए तक कौनती statutory grants but discretionary grants होची जोटा 282 अंडर अछि तो आंसर 2 हो ए डी हो डी ठीक है क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके 280 तो अच्छी ये जानथिबो ओके द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 the bonded labor system act 1976 has been enacted according to which article The Bonded Labor System Abolition Act has been enacted according to which article? Bonded Labor Abolition Act को amendment को article अनुसार आधार रे करा जाइची को धारा आधार रे करा जाइची उज्जवल सी ओके एनी अदर आंसर जल्दी दे पिलाने बहुत क्वेश्चन अछि ये 9टा क्वेश्चन हला आउरी बहुत क्वेश्चन अछि पाखा पाखी 30 35-40 टा खंडे क्वेश्चन अच्छी ठीक है जल्दी दियो ना पढ़ेबा आंसर कही मु पढ़ेबी 32 सी ना 32 नहीं तो 32 कहीं 23 अच्छा 23 हाँ यस एटा प्लान जो अच्छी कौन एबोलिशन प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग आउ प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग आउ फोर्स्ड लेबर से बॉन्डेड लेबर आउ जो हमरा इमोरल ट्रैफिकिंग इमोरल ट्रैफिकिंग ए एक्ट भी कराई छी इमोरल ट्रैफिकिंग एटा प्रिवेंशन एक्ट बोले प्रोहिबिशन एक्ट प्रिवेंशन एक्ट उठे कराई से आर्टिकल 35 1956 रेला इक्वल रेमुनरेशन भी आप कराई छी इक्वल रेमुनरेशन एक्ट एटा पे जीवो 39 डी पे भी जीवो सेमती क्वेश्चन बेसी आछिबे आइडा तो देखिल बॉन्डेड लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबोलिशन एक्ट भी आकरी पे कराई छी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबोलिशन एक्ट तो से पचार दो चारटा खंडे एक्ट दी दिथिबो से पचारिबो को आर्टिकल पे एक्ट उरा बनिछि तो किछिटा बेसिक जिंस उरा जोडा पॉपुलर एक्ट उरा सेमिति सब आमे मन रख परिबे कि तो ठीक अछि तो आंसर प्लान हबो एटा सी आंसर सी हबो ठीक अच्छे ओके पूजा ओके वेरी गुड वेलकम पूजा वेलकम ठीक अच्छे नेक्स्ट अच्छे प्लान है 10 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन आ भीतर कोटा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन नुहे कोटा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन नुहे अर्थात ऐक्य संविधान नुहे अर्थात जो वन गवर्नमेंट है नेशनल गवर्नमेंट के यूनिटरी माने कौन जो गोटे सरकार था नेशनल गवर्नमेंट देयर इज नो रीजनल गवर्नमेंट आर सब्सिडियरी फंक्शन एज सब्सिडियरी टू द नेशनल गवर्नमेंट दे डोंट हैव इंडिपेंडेंस
ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଟେରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ସୋ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ସି Norway? Yes. Any other exam? Any other answer? जल्दी दियो, जल्दी दियो. Yes, C. Yes, very good. C. शशि रेखा. Any other answer? C. Sunita. Yes, very good. प्रियदर्शिनी. C. अरे सब C रे बाड़े दीजिए नहीं कि? Okay, 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 okay. No, answer is D. All are unitary countries. एटा केवल फेडरल रशिया रशियन फेडरेशन लेखा होची ना रशियन फेडरेशन लेखा होची ना आंसर डी हो गॉट इट रशियन फेडरेशन लेखा होची ओके नेक्स्ट आसीबा separation of judiciary from executive is provided under separation of judiciary from executive is provided under separation of judiciary from executive that also a constitutional provision under which article under separation of judiciary from executive कहले judiciary रो फंक्शन रे एग्जीक्यूटिव इंटरफियर करिवे नाही एटा होची हमर लिबरल प्रिंसिपल यस आर्टिकल 50 लिबरल प्रिंसिपल एटा को प्रिंसिपल एटा होची आंसर कोन रे आंसर देखिबा आंसर होची कोन एटा सी हबो आंसर एटा होची केते लिबरल प्रिंसिपल डीपीएसपी रो नहीं कि डीपीएसपी रो लिबरल प्रिंसिपल एटा डायमेंशन सबले जानो कि जोटा को तुमे आंसर भाबुछ तार रिलेटेड एस्पेक्ट गुरा को सबले माइंड रे पिक्चराइज करो दैट इज कॉल्ड योर प्रैक्टिस एंड दैट प्रैक्टिस विल मेक यू स्ट्रांग and make you competent enough to attend most of the questions in your real exam. Therefore always try to don't entangle your mind, just open the mind and to different directions of the topic of the question so that you will recollect number of things about them that will be very much helpful for your exam. Next, Citizenship Act, very easy question jaldi diya. Citizenship Act was first enacted in को वर्ष प्रथम सिटीजनशिप एक्ट एनाक्टमेंट करा हितला फर्स्ट सिटीजनशिप एक्ट वाज फर्स्ट एनाक्टेड इन यस जल्दी लिखो प्लान ओके 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 वेरी इजी क्वेश्चन व्हाई यू आर वेटिंग Why are you waiting better? 12D 1955 and was first amended in 1957. Last amended in 2019. Clear? So it is enacted in D, first amended in 1957, last amended in 2019. Okay, last amended के बेला 2019. Next question ऐसे बोला ने in which year it लिखा in which year simultaneous election were not held in India. को वर्ष भारत रे समकालीन इलेक्शन होता एगुरा क्वेश्चन पचारि पारे जेहेतु आमर साइमल्टेनियस इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट माने ऑलरेडी अंडर कंसीडरेशन अच्छी तेणु आप पचारि पारे यहाँ पचारि भी तो नेक्स्ट रिपीट हो पारे समस्त जानी आंसर जल्दी कह टे इन व्हिच ईयर साइमल्टेनियस इलेक्शन वे आर नॉट हेल्ड अर्थात इन को वर्ष भारत में एककालीन बा समकालीन निर्वाचन कहले लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन एका समय होबाकू समकालीन निर्वाचन आम कही हाँ समकालीन निर्वाचन
तो समकालीन निर्वाचन केबे हितला बेले हम कहि परिया पिलाने जदि हम देखिया पिलाने फास्ट जनरल इलेक्शन जदि हितला फास्ट जनरल इलेक्शन हितला केबे फास्ट जनरल इलेक्शन हितला पिलाने हमर देश रे 1952 मसिया रे जदि फास्ट इलेक्शन आम दबा ताले +5 मिसले 57 रहीतला +5 मिसले 62 रहीतला तेणु +5 मिसले 67 हवा कथा यहाँ 71 अच्छी तेणु एथरे ही नतला तेणु आंसर हम डी। ओके पिलाने नेक्स्ट आसिया जल्दी लिखा आंसर Provisions of amendments of the Constitution of India is taken from which constitution? संविधान रा संशोधन नियमटा आम कौ संविधान रू आनीचे साउथ अफ्रिका व्हाट एन एक्सीलेंट आंसर साउथ अफ्रिका आनीचे बी प्लाने कनाडा रू आम क्वासी फेडरल सिस्टम टा आनीचे क्वासी फेडरल बा फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर ये जापान रो आम प्रोसीजियर जापान रो आम कौन आनीचे प्रोसीजियर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ जोड़ा मेन मेन कथा तो बहुत जिनस आनी एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ और अमेरिका रो आम बहुत जिनस आनीचे बेसिकली फंडामेंटल राइट्स टा आनीचे जुडिशियल रिव्यू टा आनीचे आउ वाइस प्रेसिडेंट आनीचे वाइस प्रेसिडेंट एथर पकई पारे कारण वाइस प्रेसिडेंट कोठू आसी बेले पचार दे पारे स्ट्रॉन्ग सेंटर फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर चलो नेक्स्ट 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 तुमको वेट करेबी नहीं कारण बहुत बहुमूल्य समय नष्ट करी आपण माने सेशन रे मोर अछंती सेतिपई समय नष्ट करिबा मोर कर्तव्य नुहे रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स फॉर मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज मेंशन्ड इन व्हिच आर्टिकल restriction fundamental rights are not equally available to members of armed forces paramilitary forces and intelligence services and analogous services they are not equal they are meant for discipline security and everything okay so को article ले प्लान अच्छी कि armed forces कहले एठी डिफेंस फोर्सेस जो अछि आर्मी नेवी और एयर फोर्स और paramilitary force even police और इंटेलिजेंस सर्विस लाइक रॉ आईबी एंड एनालोगस सर्विसेज समस्त एनफोर्समेंट डायरेक्टर भी हेले सेमानक पई फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करा जाय रिमेंबर रेस्ट्रिक्शन इज देयर नॉट सस्पेंशन तो कोडा अछि को आर्टिकल हबो एटा को आर्टिकल हबो ବୋଲି भाबुछ तुमे यस सी हबो यस 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 असासिन प्राग तो नाटा कोन असासिन अच्छा एटा वेरी गुड सी हबो 34 होउची कोन 34 होउची कण मार्शियल लॉ रेस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग मार्शियल लॉ बा मिलिटरी लॉ समर हबो 34 टा एटा 33 तेनो आंसर सी हबो 33 हबो ओके नेक्स्ट How many members were from Odisha to the Constituent Assembly? संविधान प्रणयन सभा को ओडिशा रु केते जन सदस्य जाइथिले संविधान प्रणयन सभा जोटा 46 मसिया रे हेतिला डिसेंबर 9 तारिख 46 मसिया रे प्रथम सेशन अधिवेशन आरंभ करतिला एवं ए ऐतिहासिक सभा भारत को तार चिर आकांक्षित संविधान देइतिला एवं ये गोटे पवित्र मुहूर्त से समय से 3 वर्ष पाखी 2 वर्ष 11 मास 18 दिन काल संविधान प्रणयन सभार से जो यशस्वी नेता बा यशस्वी लोक माने संविधान तैयारी करिकी भारत को देइतिले तो सेतिरे केते जण मेंबर थिले ओडिसा यस 10 जण कई मते मन पड़नी रे एडा 9 जण थिले रे 9 10 जन थिले ना 9 जन थे हाउ मेनी मेंबर्स 9 जन थिले हाँ यस 29 मेंबर्स 9 मेंबर्स थिले वन ऑफ देम विश्वनाथ दास मालती चौधरी सब थिले ओडिशा पर गोटे क्लास आनिबा देखियो
Next, 7 number. An election held unexpectedly, suddenly before the dissolution of the legislature is called. An election held unexpectedly or suddenly before the dissolution of the legislature is called. जल्दी लिखो ना 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 पूजा भलसे टी क्वेश्चन टा बुझो an election held unexpectedly 7A by election ना ना 17A unexpectedly and suddenly के कोई आंसर जल्दी को by election अरे by election टा only for vacancy in certain seats काली बरा कोई सेशन रे by election टा केवल जड़े दि जन चार जनकर सीट रे जदी फिलअप हबो सेमानकर डेथ हे येची बा रेजिग्नेशन दे दिसंती ताले सेमाने by election को आजि by election टा एंटायर हाउस पे हुए नहीं बी नुह तुलाराम बी हबनी कहिना बी टा जदी हितंता इलेक्शन हेल्ड टू constitute a house after it is dissolved before completion of the term ताले सीधा मिड टर्म एटा स्नैप इलेक्शन हबो प्लान स्नैप इलेक्शन हला मासे दि मास थिबो कि 5 मास थिबो सरकार भाबिबो कि एई समय इलेक्शन टा कले मोर फायदा हो सेटा स्नैप इलेक्शन कहंती फ्रांस रे बेसी पॉपुलर एटा बहुत सारा देश बुझी परछु धरा जो 5 मास किंतु मिड टर्म टा कोन मिड टर्म टा होची तुमरो गोटे हाउस मझिरे डिसॉल्व हे गेले जदी हाउस रे ताको मिड टर्म पोल कहंती सेटा लेखाइ नाटी मिड टर्म भी मीनिंग करूची मु मना करली किंतु जो लिखाई अनएक्सपेक्टेडली सडनली बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द टर्म डिसॉल्व हला पर इलेक्शन होनी बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द टर्म डिसॉल्व हला पर जो इलेक्शन हो जदी इफ द हाउस इज डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म देन इलेक्शन इज हेल्ड सेटा को मिड टर्म कहबा तो एटा स्नैप इलेक्शन हो वेरी पॉपुलर इन फ्रांस तो सी ऑफ आंसर ठीक है बना As per the constitution, 3-tier panchayat is not provided in the states having less than yes as per the constitution of India 3-tier panchayat is not provided in the states having less than केते भूली गलनी कि सब हां सारा पॉलिटी क्लास कलेनी बेली सब पॉलिटी गला सब गलानी 18A कहलानी कोन भलो भलो पिला गुरा हमर ब्रिलियंट पिला गुरा सब भूल करछंती हो यस सी हैव आंसर यू आर राइट प्रशांत yes बेटा 20 लाख एटा केते एटा 20 लाख पॉपुलेशन एटा कोथरे कुआइछ आर्टिकल 243 बी रे कुआइछ 3-tier पंचायत रा सिस्टम टा सी हब आंसर यस 223 बी रे कहिछि कि 20 लाख पॉपुलेशन थिबा मे नॉट गो फॉर इंटरमीडिएट पंचायत पई न जाई पारंती नेक्स्ट प्लान प्रतिष्ठा कथा मु तो प्रचार प्रसार माध्यम रे जणाई तुमको फाउंडेशन बैच एटा कांसेप्ट क्लैरिटी और कांसेप्चुअल क्लैरिटी बदे ओपीएससी आडा फाउंडेशन रे तुम पाई परिबो यू कैन कम एंड जॉइन एंड रियलाइज द डिफरेंस आई एम नॉट यूलोगाइजिंग बट आई एम नॉट टेलिंग मोर जोटा सत्य सेटा सत्य सबले प्रकाशित हुए दिन आसीबो दैट यू विल रियलाइज इट ओके Next, asiba में the composition and powers of the Election Commission of India is provided under the composition and powers of the Election Commission of India is provided under नमस्कार प्रशांत Okay. The composition B
19B 19B yes 324 B ओके এটা তো জানিছ 324 A report published by government to inform the public about its policies and initiatives is called. A report published by government to inform the public about its policies and initiatives is called. Yes. Tularam B. Gazette. रिपोर्ट परा रिपोर्ट पब्लिश होची कहउची यदि आम देखिए रिपोर्ट पब्लिश कथा से पचार गोटे रिपोर्ट पब्लिश करियो से तन पेपर शब्दटा आसीबो ना ओके तो प्लान एटा ए हबो व्हाइट पेपर बी कहीं कर गेजेटा हूँ तार ऑफिशियल ये साइट मैंने ऑफिशियल ये व्हाइट पेपर ग्रीन पेपर एरा सब रिलीज हुए जोटा कि सरकार गोटे को विषय रे लोक मान को जाने श्वेतपत्र जारी हुए श्वेतपत्र कहते श्वेतपत्र माने कौन व्हाइट पेपर से सरकार तार आभिमुख्य जनाए कि आम यहाँ करूँ जमी तार कोविड समय सरकार विभिन्न प्रकार व्हाइट पेपर जारी करते कि आम यहाँ करूँ एमती करूँ यहाँ तेणु से सरकार डिसीजनटा जना जाए से कहते व्हाइट पेपर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी जोनल काउंसिल्स आर देयर इन इंडिया हाउ मेनी जोनल काउंसिल्स आर देयर इन इंडिया इंडिया रे केतोटी जोनल काउंसिल अच्छी हाउ मेनी जोनल काउंसिल्स आर देयर इन इंडिया इंडिया रे केतोटी जोनल काउंसिल अच्छी Yes. How many zonal councils are there in India? कितने हब 6 very good 6 प्लान है नहीं कि 5 जोनल काउंसिल्स अंडर 1956 एक्ट आउ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971 नाउ देयर आर 6 zonal councils India is divided in 2 okay 6 yes 6 general councils तमने सेंट्रल आउ कोन सेंट्रल नॉर्दर्न सदर्न ईस्टर्न वेस्टर्न ईस्टर्न वेस्टर्न आउ नॉर्थ ईस्टर्न आउटे नॉर्थ ईस्टर्न 3 नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड फॉर एससीज इन ओडिशा ओडिशा रे केतोटी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी एससी कम्युनिटी मानक पई रिजर्व अछि हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड फॉर ओडिशा फॉर एससी How many Lok Sabha constituencies are reserved for scheduled caste communities in Odisha? Yes, jaldi likho answer. चलो बेटा कितना अच्छी सीट ये सबू ओडिशा डाटा गुरा सब आम केतटा अच्छी 3टा सीट 3टा परा एसटी होची एटा होची डी एटा होची एसटी सीट 5टा होची एसटीज एटा होची एससीज 5 3 8 21 रु 8 गले 13 हला अनरिजर्व्ड तो माने ओडिशा रे जगतसिंहपुर जाजपुर आउ भद्रक ए 3टा होची एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी जगतसिंहपुर आउ जाजपुर आमर भद्रक ए 3टा होची एससी सीट तापर सदर्न साइड रे जो अच्छी 5टा होची एसटी सीट ठीक अच्छे तो से देखियो ठीक तो एसटी सीट टोटल 21 - 8 13 होची अनरिजर्व्ड 22 नेक्स्ट
Delhi was renamed as National Capital Territory of Delhi in which year? को वर्ष दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली रो मान्यता दिया जाइतला बा ताकू डकाइतला यस 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 ऑल इंडिया रे 8447 यस यू आर राइट प्रशांत ऑल इंडिया रे अधिका हमरो एसटी का अधिका एससी कम मध्य प्रदेश हला कि झारखंड एगुरा सब से ठीक अच्छे हमरो एसटी रिजर्वेशन अधिका एससी कम according to proportion 23 number C 1992 yes 69 amendment act by केते 69 constitutional amendment act 1991 नहीं की ठीक है तो एटा आंसर हबो सी आंसर सी हबो गॉट इट नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनलार्ज देई की कराइछ What can the civil servants do? Very easy question to answer. What can the civil service servants do? Civil servant माने कौन करी परिबे बा तुम्हें कौन करी परिबो बोली तुम पचार हाँ तुमको को पचार कौन करिया पड़ियो हाँ ठीक अच्छे प्रकाश यस 92 ना 92 रे इम्प्लीमेंट हेची प्रशांत सेटा 61 91 हबो ठीक 91 रे अमेंडमेंट हेची 92 रे सेटा इम्प्लीमेंट हेची सेमती पड़े क्वेश्चन ईयर पड़िले 92 हबो और अमेंडमेंट पड़ले 69 हबो 91 गॉट इट 24 केते हला 24 दे डू इंपोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस की करा तो दे डिसीजन लेबो पॉलिसी डिसीजन से मान के मिनेबे मिनिस्टर माने कोन करिवे नो डाउट से माने ही थांती सब जिनस रे किंतु इन प्रैक्टिस theoretically the civil servants implement the minister's decisions minister's decision को implement करते they implement minister's decision they are not policy makers but no doubt they play a significant role in policy design okay they play a significant role in policy design 25 number what does the Supreme Court say over the parliament's power of amendment of the constitution Supreme Court parliament ro power upre kon कहिसंती amendment power संशोधन क्षमता उपरे okay what does this say parliament can amend the entire constitution parliament can amend only basic structure of the constitution parliament cannot amend the basic structure at a C habo nahi ki C habo next question who among the following is an example of permanent executive anka vitru kiye permanent executive re ame pariganita kariba who among the following is considered as permanent executive yes ठीक है yes तापर देखो पुराने who among the following is an example of permanent executive का को हमें permanent executive वा career executive हमें कहते हैं permanent executive माने कौन career executive का को हमें career executive कही परिबा छब्बीस very good DC yes very good yes plan yes D तापर आसीबा for how long can the Rajya Sabha delay a money bill very easy question for how long Rajya Sabha can delay a ओके कितने मास कितने दिन 14 days I mean 2 weeks बिल्कुल 2 weeks ऑप्शन भी देता है डी इट कैन रिटेन द मनी बिल ओके नेक्स्ट
जल्दी कह दियो दुटा क्वेश्चन अछि हु अमंग द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आ भितरु किए नॉट ए पार्ट ना इज ए पार्ट इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सेटा करथिले परमानेंट एग्जीक्यूटिव एटा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव रो के पार्ट नुहे यस चलो बेटा which not a part of the political executive not is a part acha is a part a very good concept yes is not a part of is a part of political executive not a permanent executive all are political all are permanent executives what is the nature of tenure of office of the prime minister of India what is the tenure of office of the prime minister of India yes what is the tenure of office of the prime minister of India 5 years केमती कहिबा पूजा yes आगे भाई आंसर 29A केमती कहिबा केमती D what a great answer D हबो ना प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव फिक्स्ड टेन्योर प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव फिक्स्ड टेन्योर कि तांकर टेन्योर सेमती नहीं 5 वर्ष से रहिबे देयर आर मेनी प्राइम मिनिस्टर हु हैव नॉट सर्वड फॉर 5 years बहुत प्राइम मिनिस्टर अछंती मोरारजी देसाई चरण सिंह देवगौड़ा बीपी सिंह मिस्टर चंद्रशेखर मिस्टर देवगौड़ा मिस्टर इंदर कुमार गुजराल मिस्टर चरण सिंह मिस्टर मोरारजी देसाई देयर आर लॉट ऑफ प्राइम मिनिस्टर हु हैव नॉट सर्वड इंडिया फॉर 5 years दे आर इवन बिलो 1 year बोला भी अछंती नहीं कि तो डी हबो प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड टर्म ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन प्लान लास्ट क्वेश्चन एटा केते 29 गलो ना 30 yes okay which organ of the government has the power to interpret the constitution last question प्लान है ना 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 सेटा टेन्योर नु आमे प्राइम मिनिस्टर टेन्योर अछि बोली कहि परिबन 5 वर्ष से रहंती यू आर राइट 5 वर्ष रहंती किंतु टेन्योर कहले कोन ना फिक्स्ड टेन्योर जोटा कहछ तो डज नॉट हैव फिक्स्ड टर्म जदी ऑप्शन रे अछि त सेटा हबो जदी ऑप्शन नाही 5 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष एमती अछि त 5 वर्ष धरि किछ असुविधा नै एठी किंतु आंसर ता हबो कोन फिक्स्ड टेन्योर नाही डी हबो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन रा आंसर चेंज हे जो ठीक अछि प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर एमानकर फिक्स टर्म न थाए से 5 वर्ष रही पारंती न रही पारंती तो एटा कोन प्लान इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशनल डी ठीक है प्लान थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विथ मी फॉर ए लॉन्ग टाइम आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू ठीक है नेक्स्ट सैटरडे पुनी मोर क्लास अछि ए फ्राइडे रे निश्चित भाव में जॉइन करियो 5टा बेले आउरी बड़ा बड़ा क्वेश्चन आनिबा एवं डिस्कशन करिबा खाली ओएस पई नो डिफरेंट एग्जाम पई पॉलिटी रो कांसेप्ट क्लियर पई एवं ता सहित ओडिशा हिस्ट्री ओडिशा पॉलिटी रो क्वेश्चन भी किछि रखिबा तो नेक्स्ट फ्राइडे कमिंग फ्राइडे at 5 PM I will be with you with more interesting question more valuable question for you ठीक है थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विथ मी अच्छा सी इज देयर सी रो इंटरप्रेट करि परिबो हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट जहाँ करि परिबो हाई कोर्ट भी से करिवो ठीक अछि ओके गॉड ब्लेस यू ऑल